how conductivity varies with the concentration. What do you mean conductivity? Conductivity of ions means it depends on movement of ions. Okay, so conductivity, when we consider conductivity, conductivity will decreases with the decrease in concentration. It is important. Conductivity decreases with the decrease in concentration. The reason is conductivity depends on number of ions present per liter of solution. Okay, so conductivity means number of ions present per liter of solution. So when we decrease the concentration means we add more and more solvent into solution. When we add more and more solvent into solution, the number of electrolytes which are present per liter of the solution decreases. As a result, conductivity decreases with decreasing concentration. So this is the first point that you have to be noted. What is the first point? I am talking of conductivity. Conductivity depends on number of ions present per liter of solution. When we decrease the concentration, we can otherwise say that when we dilute the solution, then what will happen? Number of ions present per liter of the solution decreases. As a result, conductivity decreases. So keep it in a rectangular box. Conductivity decreases with decreasing concentration. Very, very important. Okay, so this is the first point. Now we will consider the second quantity, that is molar conductivity. It is totally different. For that you must know what is molar conductivity. Molar conductivity is defined as the conductance of an electrolytic solution which contain 1 mole of an electrolyte. Got it? Molar conductivity. So when we are studying the detailed definition, molar conductivity is defined as at a given concentration, the conductance of an electrolytic solution kept between 2 electrodes of 1 centimeter length and with area of cross section A contain 1 mole of an electrolyte. This is the detailed definition. We don't want that in this particular theory. This detailed definition is in the book. So you can go through that definition. Now we will discuss the nutshell of the same. What does it mean? Molar conductivity means it is the conductivity at the given concentration for an electrolytic solution which contain 1 mole of an electrolyte. So, V liter of solution contain 1 mole. 1 mole is fixed and volume is also fixed as V. Then, molar conductivity, what happens when we decrease the concentration of electrolytic solution? What will happen to molar conductivity? So, studies prove that as we decrease the concentration of an electrolytic solution, its molar conductivity increases. Its molar conductivity increases. The reason is molar conductivity is related to 1 mole of an electrolyte which is present in V volume of solution. So when we add more and more solvent into the solution, what will happen? The space available for the movement of ions increases. As a result, molar conductivity will increases. So note down this point. Which point? Molar conductivity increases with decreasing concentration. Write it down. Molar conductivity increases with the
decrease in concentration. The reason is that when we add more and more solvent, the quantity of electrolyte which we are considering in molar conductivity is always 1 mole. 1 mole of an electrolyte present in p liter of the solution. So that quantity of electrolyte never changes. It always 1 molar, 1 mole of an electrolyte. But when we add more and more solvent, that means when we are decreasing the concentration of solution, the ions will get more space. As a result, molar conductivity increases with decrease in concentration. So this is the second point. Now, with the help of a graph, we can correlate molar conductivity and so there is a graphical representation of molar conductivity versus concentration. So this graph is very important. Try to draw the graph. We plot a graph connecting square root of c. Square root of c means c to the power 1 by 2. What do you mean by c to the power 1 by 2 square root of c? And here on y-axis we are plotting lambda m. Lambda m means molar conductivity. Got it? Here we are considering 2 types of electrolyte. One strong electrolyte and one weak electrolyte. See the difference in the graphical representation of strong electrolyte and weak electrolyte. First, I will draw graph related to a weak electrolyte. Look at the graph. This is the curve which represents weak electrolyte. And in this experimental information, the weak electrolyte is, one example is taken. Which example is there? Acetic acid. Acetic acid is considered as the weak electrolyte. So here you can write weak electrolyte, and here in bracket you can write, for example, acetic acid. Weak electrolyte. This graph is very important. Okay. Similarly, we can plot a graph related to strong electrolyte, and for here standard solution we have taken as potassium chloride. It is considered as a strong electrolyte. Look at the representation. This is this single line like this. This is this line which represent strong electrolyte. Strong electrolyte. And here example you can write which one taken as the strong electrolyte, potassium chloride. ये हवा में लग रहे, हवा में ऐसे ही ग्राफ आएगा. Okay. Now, so when we extrapolate the graph, extrapolate means when we extend the graph like this, it intercepts at the point on y-axis. This point of intersection is known as lambda naught. That is important. Point of interception. In the case of strong electrolyte, is denoted as lambda naught m. And lambda naught m is known as limiting molar conductivity. Write it down. Limiting molar conductivity, or it is also known as molar conductivity at infinite dilution. Limiting molar conductivity, or it is known as molar conductivity at infinite dilution. Got it?
Now come to the weak electrolyte. Is this kind of interception is possible in weak electrolyte? Say, this kind of interception is possible in the case of weak electrolyte or not? Anyone? No, ma'am. No. Why is it not possible? Because you can see that these are the lines which are moving parallel. It never intersect. It never intersect, right? So, in the case of weak electrolyte, it is very difficult to find out limiting molar conductivity or molar conductivity at the infinite dilution. Okay, so this is the important point. Okay, now I will rub the board because we have limited space for continuation. I hope you have drawn it in your OP. Now we can do separate study of strong electrolyte and weak electrolyte. Strong, you can write it as capital A. So here you can mention strong electrolyte. In the case of strong electrolyte, there is one formula which is given by Huckel and Onsager. Huckel and Onsager. Both scientists, Huckel and आपको याद है ये हक्कल साइंटिस्ट सुना है कहीं? हक्कल किसी को याद है? हमने पढ़ा है हगल्स लॉ। किसी को याद है? आयुष मैम सुना है पर मैम याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? कोई और बच्चे जो सुना है हक्कल? मैम रूल था क्या मैम इनका? हाँ रूल है, हाँ गुड। और सोचो गोविंद, शायद तुम्हें याद आएगा। हक्कल कहाँ में हमने सुना है? और सोचो, किसी को याद आ गया? मैम 11 में पढ़ा था ना वो। 11th में, हाँ चलो इतना हो गया। और आगे? मैम वो 4th चैप्टर में कंपाउंड। हक्कल हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हक्कल्स रूल, एक कंपाउंड एरोमेटिक यानी फिक्स करने का एक रूल है ना, इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। याद है हक्कल रूल? ये हक्कल yes, चाहिए हक्कल। तो हक्कल एंड वन मोर साइंटिस्ट Onsager. These are the two scientists who worked on this field. They formulate an equation. What is an equation? All of you should write that equation. Lambda m equal to lambda naught m minus a into c to the power half. This is the equation formulated by Huckel and Onsager. So the equation is called the Huckel-Onsager equation. Lambda m is equal to lambda naught m minus a into c to the power half. Now, what is lambda m? Molar conductivity. Lambda naught m, molar conductivity at infinite dilution. A is a constant. A is a constant. And how will we get the value of A? Very simple. When we plot the graph, we have already get one graph like this. There we can take the slope. Slope of that curve, slope will give the value. Slope is equal to minus A for the strong electrolyte. Slope, right? And point of interception is lambda naught m. So through this calculation, we will get the value of which one? We can get the value of A. Suppose this is not, this is not, this is unknown, we can get the value of A. So this formula is important. This is worked out only in the case of strong electrolyte. Because only in the case of strong electrolyte, interception is there so that we can calculate the value of lambda naught m. And the value of A depends on the charge of cation and anion. Ma'am, why we taken a c to the power half? No harm. You can write it down. Square root of c also, no harm. It is square root of c. So in the graph we have represented half. Square root of c is also called the c to the power half. That I think everybody knows. Okay. So for a given electrolyte, you know that when we consider cation and anion, there are different type of electrolytes. I will show you some example. Right. NaCl.
Here, how many cation carrying how many charge Na? Na means plus. Cl also, Cl carrying the charge minus. So this one we can represent it as 1-1. This electrolyte is represented as 1-1. 1-1 means one cation and one anion. The charge carried by the cation is +1. Charge carried by the anion is -1. This is the meaning. So another example, CaCl2. Say this electrolyte belongs to which category? Anyone can say. Like here I have written 1-1. Say how to represent CaCl2? How to represent? Anyone? Calcium. What is the charge carried by calcium? Say 2 plus 2. 2 plus. So we can write 2. What is the charge carried by Cl? Minus 1. correction. -1. So this belongs to the category 2-1, correct? And again, when we write next example MgCl2, it also belongs to the same category 2-1. Mg2 plus Cl minus 1, 2-1. Okay. Another example MgSO4. How will you represent MgSO4? It is also an electrolyte. How to represent MgSO4? Say 2-2. 2-2. Very good. 2-2. CaSO4. CaSO4. Again, it is 2-2. very good. So studies prove that all electrolytes of the type, suppose those electrolytes belong to this category, they all carry same value for A. Their value of A remains constant. That means for the given type of electrolyte, the value of A remains constant. मतलब है calcium chloride और magnesium chloride की A value same है. Similarly, MgSO4 और calcium sulfate का भी A value, constant value same है. क्यों same है? क्योंकि they belong to the same category. Got it? So this is the first point which is related to strong electrolyte. Now we come to the next one. What about weak electrolyte? It is difficult to calculate the value of molar conductivity because it is very difficult to calculate molar conductivity at infinite dilution, lambda naught m, for a weak electrolyte. So one scientist called Kohlrausch proposed a law known under the name Kohlrausch's law of independent migration of ions. ये सुनने में बहुत लंबा है, बट ये सिंपल लॉ है. सो पहले मैं वो साइंटिस्ट की नाम लिख लूं बोर्ड पे. नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कोलरैश. Kohlrausch. Kohlrausch. He proposed a law known under the name Kohlrausch's law of independent migration of ions. Law of independent migration of ions. Law of independent migration of ions. So I will first say the statement. Maybe you can't understand anything. Afterwards I will give one illustration. Then again I will say the statement. Okay, listen very carefully. The law states that limiting molar conductivity का मतलब lambda naught m. Limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of the individual contribution of anion and cation of the electrolyte. This is the law. Now I will give an illustration. Through that you can understand it better. According to Kohlrausch, so I will give one example. Let us take sodium chloride. Sodium chloride is made up of one cation and one anion. According to Kohlrausch's law of independent migration of ion, lambda naught m of NaCl equal to, see here हमें small letter use करना है, lambda naught m of Na plus lambda naught m of Cl minus. This is the law known under the name Kohlrausch's law of independent migration of ions.
Now I will again say the statement. Understand, the law states that limiting molar conductivity of an electrolyte, limiting molar conductivity lambda naught m of an electrolyte, here I have taken the example NaCl, is the sum of individual contribution of cation and anion, sum of individual contribution. इसमें कौन सी आयन है, एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। इंडिविजुअली हमने दोनों की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे लिखा है, देखो इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर लैम्डा, lambda naught m of Na plus lambda naught m of Cl minus. This law is called the Kohlrausch's law of independent migration of ion. Here the charge carried by the ion is 1. Suppose the charge carried by the ion is 2. It will not make any difference. But I will give the example. CaCl. How will you write this calcium contained? Then we write the dissociation of calcium chloride. How will you write it? Ca2 plus 2 into Cl minus. ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेशन करना है? इक्वल टू लैम्डा नॉट m of Ca2 plus 2 into lambda naught m of Cl. यही फर्क है। तो डिसोसिएशन इक्वेशन पहले लिखना है, कितनी आयंस आ गया उसके अकॉर्डिंगली एडिशन के पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वो हम करवाएंगे। ठीक है, ये है Kohlrausch's law of independent migration of ion. Now, what is the utility of this law? This law is useful in those cases where we can't find out lambda naught m value through graph. Like this law is valid and it is highly applicable for weak electrolyte for the determination of limiting molar conductivities. Okay, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कर्व मिला है, वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे केस में ये लो अप्लाई करने में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल सकता है। ये इसकी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन। ठीक है, अब आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा और इसकी स्टेटमेंट अगर किसी को चाहिए, अभी इतनी समझ में आया तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, समझ में आया तो वही लिख लो। वेरी गुड, एक ही वही आ रहा है, बाकी किसी को समझ नहीं आया। श्रीयेश भाई बोले वेरी गुड, ठीक है। हर्षित, यश, आमिर, कोई गर्ल्स नहीं है क्या? मंजुल, शशांक, गर्ल्स सब सो रहे? अनिंद्र, दीपेश, वेरी गुड, सारे मेरे लड़के लोगों को समझ में आया। अच्छा ठीक है, नंदिनी को समझ में आया, पूनम वेरी गुड। चलो, मैं तो डर गई थी कोई लड़कियों में से कोई वाई नहीं लिखा है, वेरी गुड। चलो, अभी ये स्टेटमेंट किसी को चाहिए तो लिख लो। चाहिए क्या? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ चाहिए। चलो एक सेंटेंस से जल्दी लिख लो। The law states that limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of molar conductivities of
individual contribution of cation and anion of the electrolyte ओके सो ये है लो और इसकी स्टेटमेंट हमने बता दिया। अभी मैं सिर्फ आपको 3 फॉर्मूला बता दूंगी, उसकी ज्यादा कोई डेरिवेशन हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये न्यूमेरिकल में आएगा, ये डायरेक्ट तुम्हें 11th क्लास से कनेक्टेड है, ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से है, लेकिन अभी इसकी एप्लीकेशन ही हमें चाहिए, तो सिर्फ तुम्हें एक फॉर्मूला ही लिखना है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। Alpha is called the degree of dissociation. ठीक है, alpha can be calculated with the help of lambda m and lambda naught m. तो ये फॉर्मूला लिखो, alpha is equal to lambda m divided by lambda naught. This is the first formula. फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है Ka मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसमें भी एक फॉर्मूला है, ये भी हमने पढ़ा है, C alpha square divided by 1 minus alpha, C alpha square divided by 1 minus alpha, ठीक है। अगर लैम्डा नॉट m दिया है तो बिना अल्फा कैलकुलेशन करते हुए के वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक फॉर्मूला है, उसमें सिर्फ लैम्डा m और लैम्डा नॉट है, वो मैं अभी लिखती हूँ। अभी ये दोनों लिख लिया है तो मैं एक और फॉर्मूला लिखती हूँ, लास्ट फॉर्मूला Ka is equal to C lambda m square, C lambda m square लिख लिया, डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m, फिर उसमें स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करना है, तो फिर आपको लिखना है लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा। ये फॉर्मूला यूज करके भी हम Ka का वैल्यू, ये एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन है, 11th क्लास के रिलेटेड है, लेकिन कोई हम एक्सक्यूज नहीं बोल सकते, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द थियरी which is related to electrochemistry chapter। इसमें जितनी थियरी है बस यहाँ तक है, ठीक है, और बाकी जितनी है जो सेल है ये सब डिलीटेड कोर्स है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करना पड़ेगा? इसमें न्यूमेरिकल है वो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको अभी दे देती हूँ 2-3 और इसके बाद फिर वापस हम कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको आज की जो नया थियरी हमने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पहले दे देती हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे एक डाटा तो बोर्ड में लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं लिख लेती हूँ, तुम लोग भी लिख लो। सिंपल वाला क्वेश्चन देती हूँ मैं, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट, मैम चैप्टर इज ओवर नाउ, हाँ थियरी ओवर है गोविंद, थियरी ओवर मतलब आधा हो गया, उसमें जो प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल का वो हम कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मुझे टाइम चाहिए। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड at infinite dilution from the following data, ठीक है, लिख लेना क्या दिया हुआ है, given that lambda naught Mg2 plus equal to 107.12, यूनिट लिख लो, ohm raised to -1 सेंटीमीटर स्क्वायर mod raised to -1, ठीक है, और lambda naught Cl minus equal to 76.37 ohm raised to -1 सेंटीमीटर स्क्वायर mod raised to -1। ohm raised to -1 का दूसरा है Cl,
SIEMAN, सीमन, दोनों की सेम मीनिंग है। ठीक है, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी लिम्फिड डायल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना है, MgCl2 will give Mg2 plus 2Cl minus, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा नॉट m of MgCl2 equal to lambda dot m of Mg2 plus 2 into lambda dot m of Cl minus। आसान हो गया ना, तो सब्स्टिट्यूट करो, ये क्वाड्रेचर लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, जल्दी करो इसको, बस एक इंटू करना है फिर ऐड करना है, वैल्यू जल्दी फाइंड कर दो। किसी को वैल्यू मिल गया तो मुझे बता देना, ठीक है, मैंने पूरा तो लिख लिया है। आयुष, ये आयुष वापस से करो बेटा। हाँ हर्षित, वेरी गुड, हर्षित का आंसर सही है, ईशा के आंसर सही है, क्लैपिंग कर देते हैं उन लोगों की भी। वेरी गुड गोविंद, फिर पहले तुम्हारे गलत कैसे हुई है बेटा, अभी सही, अच्छा आयुष की गलत हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, ये सबके लिए हो गया ताली। हाँ अंजलि वेरी गुड, दीपेश गुड, आयुष वेरी गुड, 259.86, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं, आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दिस। ठीक है, कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा, किससे पूछो, ओवेश, वेश किया है, यस मैम, मिल गया आंसर, मैं अभी कर रहा हूँ। कर रहे जल्दी करो। हाँ मंजुल, अच्छा हो गया आपने बता दिया, नेक्स्ट में आपके नाम बोलने वाली थी। ठीक है, गर्ल्स में से निवेदिता, गॉट इट, Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, आनमेरी, डिड यू गेट द आंसर? Ma'am, I was absent past few days, so चलो ठीक है, कब पढ़ना है अभी है? अच्छा एक और क्वेश्चन कर दूं अभी, एक और क्वेश्चन कर लूं, ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन